Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you again in your maths class. We are studying chapter 13, direct and inverse proportions from class 8th maths. In our previous video, we discussed what is meant by direct proportion. Let us recall that two quantities are said to be in direct proportion if with increase in one quantity, the other quantity also increases, or with decrease in one quantity, the other quantity also decreases in such a way that the ratio of the two quantities always remains constant. And so if two quantities x and y are in direct proportion, then we can write x1 upon y1 equal to x2 upon y2, where x1 and y1 and then x2 and y2 are the corresponding values of the quantities x and y here. So if we have two quantities in direct proportion, then we will be taking the ratio of the values of the two quantities, different values, and then we will be equating them. अगर दो क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें दी हों तो हम उनकी अलग अलग वैल्यूज़ के रेशो लेंगे, उनको इक्वेट करेंगे और इसी से हम आने वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1. Be ready here and we start with the first question. Following are the car parking charges near a railway station. Here we have been given the car parking charges near the railway station, and these are given as up to 4 hours rupees 60, up to 8 hours rupees 100, up to 12 hours rupees 140, and up to 24 hours rupees 180. Check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. Now here the two quantities that are given are here. First one is representing the parking time. First quantity is parking time and the second quantity is parking charges. ये दो quantities यहाँ पर mentioned हैं और अब हमें ये check करना है कि क्या ये दोनों quantities आपस में directly proportional हैं या नहीं. तो ऐसे में हम ये अलग अलग values के ratio find out करेंगे और अगर हर बार ये ratio equal आते हैं तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों quantities directly proportional हैं. If the ratio of these two quantities come out to be equal every time, then we can say that the two quantities are directly proportional. So here we will be finding the ratio of parking time to the parking charges, and we take the next page here. We find the ratio of parking time to the parking charges. First one we see here, it is given as 4 hours the parking time and parking charges rupees 60. So first ratio will be 4 upon 60 and this will be given by 1 by 15. We can divide by 4 and this will be the ratio. Then the second one we see here 8 hours and rupees 100. So we find the ratio 8 upon 100 and on dividing by 4 we get it 4 2s are 8 and 25 times 100, 2 by 25. The two ratios are not equal. Let us find the third ratio also. We see here 12 hours and rupees 140. So 12 upon 140. We can divide here by 2, 2 6 and here 70. Again on dividing by 2, 3 times, and then here we have 35. Again the ratio is not equal. We find the fourth one here. This is given 24 hours and rupees 180. 24 upon 180 on dividing by 6, 6 4s are 24, 3 and 0. Again on dividing by 2, 2 2s are and 15 times. So what we see here, all the four ratios are not equal and so the two quantities are not in direct proportion. We can write here, let me make some space here, and now we can write, we see that the ratio of the parking time to the parking charges is not constant. Constant नहीं है, अलग अलग values आ रही हैं.
And therefore, what was the question? Just see, check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. So the answer is no, and we write here, hence the parking charges are not in direct proportion with parking time. With this we give the answer to the first question. Is it okay? I hope the question is very much clear. Now we can take up the next question. Remember, the ratio should be constant every time between the two values that we are taking, और यहाँ पे ratio same नहीं है, that means it is not a case of direct proportion. Next we take here question 2. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base. एक मिक्सचर बनाया जा रहा है पेंट का, जिसमें रेड पार्ट कितना ले रहे हैं, 1 पार्ट, और बेस जो ले रहे हैं वो है 8 पार्ट्स. इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड. अब ये टेबल दी गई है जहां हम देख रहे हैं कि रेड पिगमेंट का पार्ट 1 है, तो पार्ट ऑफ बेस इट इज़ गिवन एज 8. नाउ इफ द red pigment is taken up 4 parts, then how many parts of base should be added? Similarly, for 7 parts of red pigment, how many parts of base should be taken? And similarly, for 12 and 20 parts of red pigment, how many parts of base should be added? This is the question. Now here this is obvious that the parts of red pigment, as they are increased, the parts of base will also be increased, and the ratio should be same, because otherwise the color will be changed. जो mixture चाहिए हमें पेंट का, अगर उसमें हमने red pigment और base का ratio change कर दिया, तो जो mixture का color है वो अपने आप change हो जाएगा. तो यहाँ जो ratio लेना है वो तो same ही लेना होगा, और ऐसे में अगर हम रेड पिगमेंट का एक पार्ट ले रहे हैं तो उसका 8 टाइम्स है बेस का पार्ट. एंड सो विद दिस टेबल वी कैन ऑब्वियसली सी दैट दिस शुड बी 8 टाइम्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट. 4 into 8. Here similarly 8 times of 7, 8 into 7, 8 times of 12, 8 times of 20. In this way we can write the answer obviously, but we need to present the answer also. और वो कैसे प्रेजेंट करेंगे? यहाँ जो पहले अननोन हैं उन्हें हम वेरिएबल से डिनोट करते हैं. वी राइट हियर, लेट मी टेक द पेज अपवर्ड्स. यस, लेट द पार्ट्स ऑफ बेस corresponding to 4, 7, 12 and 20 parts of red pigment be X, Y, Z and W respectively. हम इन पार्ट्स को कैसे ले रहे हैं? अननोन्स को, इसको x मान लिया करस्पॉन्डिंग टू 4 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, इसको y मान लीजिए, इसको z और इसको w. क्वेश्चन क्लियर है? हम यहाँ पर एक मिक्सचर बना रहे हैं पेंट का, जिसमें रेड पिगमेंट कितने पार्ट लेना है? 1 पार्ट, और बेस कितना पार्ट लेना है? 8 पार्ट. अब जैसे ही हमने रेड पिगमेंट की पार्ट्स बढ़ा दिए तो हमें बेस के पार्ट्स कितने बढ़ाकर लिखने हैं, कितने होने चाहिए ये बताना है. तो ऑब्वियस है, अगर हम इसको 4 टाइम्स बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और हम जानते हैं कि ये रेशो है 1:8, तो अब क्योंकि हमने 1 से ये 4 पार्ट कर दिए हैं, तो अब यहाँ जो आना चाहिए वो इसका 8 टाइम्स होना चाहिए. 8 टाइम्स ऑफ 4. दिस इज ऑब्वियस. एंड हाउ टू प्रेजेंट? वी आर राइटिंग हियर, फर्स्ट वी हैव टेकन द अननोन वैल्यूज एज x, y, z and w, and since here we see that the two quantities, this one and this one, these two quantities are directly proportional to each other. We see here, let us first write this part.
Here we write, in the mixture of paint, the parts of red pigment and base are directly proportional to each other. This is important. और जैसे ही हम ये बात लिखते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, हमें इनके अलग अलग रेशियोज़ इक्वल मिल जाएंगे. इनकी जो अलग अलग वैल्यूज़ के रेशियोज़ हैं वो इक्वल मिल जाएंगे. एंड सो फर्स्ट वी विल इक्वेट दीज टू रेशियोज़. सो हियर वी राइट, दिस इम्प्लाइज 1/8 इज इक्वल टू 4/x. ठीक है. फ्रॉम हियर वी कैन राइट, मल्टीप्लाई दिस 1/x. On cross multiplying we get x equal to 4 into 8 और x equal to 4 8 32. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है 32. और अभी हमने बात की थी, जब हम रेड पिगमेंट्स 4 लेंगे, पार्ट्स 4 लेंगे फॉर रेड पिगमेंट, देन द पार्ट्स ऑफ बेस इट शुड बी 32. ओके. नेक्स्ट हियर फॉर 7 parts of red pigment, we write here, let us give it part 1. Then for the second one we have 1/8 equal to 7/y. अब हम इन दोनों ratios को equate कर रहे हैं, this one and this one. And so here this implies, on cross multiplying, y is equal to 7 into 8 और y is equal to 56. Again we take the third case. अब यहाँ पर भी हम कौन से दो रेशियोज इक्वेट करेंगे? आप चाहें तो इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, y की वैल्यू हमें मिली गई है. आप चाहें तो यहाँ सेकंड और ये फोर्थ को इक्वेट कर सकते हैं, इसकी x की वैल्यू हमें मिल गई है. और हम फर्स्ट और इसको फोर्थ को भी इक्वेट कर सकते हैं. वी हैव हियर 1/8 इक्वल टू 12/z. दिस इम्प्लाइज, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, z विल बी इक्वल टू 8 into 12 and this implies z is equal to 96. So for 12 parts of red pigment we need 96 parts of base. Then for the last part we write here, fourth case, 1/8, this ratio will be equal to 20/w, and this implies, on cross multiplying, w will be equal to 20 into 8 and this will be equal to, here this gives us w equal to 160. So what we see, for 20 parts of red pigment we need how many parts? 160 parts of base. The question is clear. Now we need to write the answer fairly. We take it here. Hence the parts of base that need to be added are, for 4 parts of red pigment we need 32 parts of base. For 7 parts of red pigment we need 56 parts of base. For 12 parts of red pigment we need 96 parts of base. And for 20 parts of red pigment we need 160 parts of base. So the question is clear. यहाँ हमने देखा कि ये दोनों parts डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और ऐसे में हमने ये रेशियोज़ अलग अलग जो थे, इन्हीं क्वांटिटीज़ की अलग अलग वैल्यूज़ के जो रेशियोज़ थे उनको इक्वेट किया और हमें यहाँ पर मिल गई ये अननोन वैल्यूज़. यहाँ हमने यूज़ किया कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. नेक्स्ट हियर वी टेक क्वेश्चन 3. इन क्वेश्चन 2, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? अब यहाँ पर आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए वो दो क्वांटिटीज़ कौन सी हैं जिनकी बात हो रही है. तो एक क्वांटिटी हमें जो समझ में आ रही है वो है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट. यहाँ से अगर हम इस तरह से लें, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, एक तो ये क्वांटिटी हो गई. और सेकेंड क्वांटिटी जो हमें समझ में आ रही है वो है क्वांटिटी ऑफ बेस. यहाँ पर हम 1 पार्ट ले रहे हैं ऑफ रेड पिगमेंट and for 1 part of red pigment we need 75 milliliter of base. ठीक है. अब हमसे पूछा है how much red pigment should we mix with 1800 milliliter of base. तो पहले जो unknown है उसे हम variable से denote करते हैं. We write the solution here. We suppose that let the amount of red pigment to be mixed with
1800 ml of base be X parts. हम मान रहे हैं कि X parts of red pigment we need to mix with 1800 milliliter of base. Now we write the two quantities in tabular form. We write here, then we form one table. Let me draw one table first. We take one table here, and now we will write the values inside this table. Yes, first quantity, it is part of red pigment, parts of red pigment. This is the first quantity, and then the second one is the quantity of base and it is given in milliliter. Now first part, we have one part of red pigment mixed with 75 milliliter of base. ये हमें दिया गया है और अब हमें ये पूछा गया है कि कितने पार्ट्स लेने चाहिए रेड पिगमेंट के in case of 1800 milliliter of base. So this quantity is given as 1800 milliliter and this we have assumed to be X parts. ये हमने X parts assume कर लिया है कि 1800 milliliter of base में हम X parts mix करेंगे red pigment की. This is clear. अब यहाँ पर क्योंकि पेंट की बात हो रही है तो जो दोनों पार्ट्स हैं बेस और रेड पिगमेंट उनका रेशो सेम होना चाहिए हर बार. अगर रेशो चेंज किया तो कलर ही चेंज हो जाएगा. To maintain the same color we need to take the two parts, the red pigment and the base, in the same proportion every time. And so here the two quantities, these two quantities, these are directly proportional to each other. We write here the two quantities are directly proportional to each other. और अब क्योंकि ये directly proportional है तो इन्हीं quantities की अलग अलग values के जो ratio होंगे वो equal होंगे. And so here we will take the ratio of these two quantities 1/75. We take the ratio of these two quantities X upon 1800 और दोनों ratios equal होंगे. We write here this implies 1/75. This will be equal to X upon 1800. Now simple, send this 1800 to the LHS in the numerator in multiplication upon 75. This is equal to X. This implies X is equal to how much? Let us divide here. We can divide by 5 15 times and this will go 3 times, 6 times and 0. Again we can divide by 15 one time, then 15 2s are 30 and then we will have 4 times 60. So on dividing first by 5 and then by 15 we got X equal to 24. And so what we see here, that the amount of red pigment that should be mixed, it is 24 parts. So the required amount of red pigment is 24 parts. So for 1800 milliliter of base we need how many? 24 parts of red pigment. The question is clear. हम सभी questions में देख रहे हैं कि पहले वो दो quantities कौन सी हैं जिनके बीच में relationship हमें check करनी है. उन quantities को identify कीजिए, unknown को variable से denote कीजिए, quantities को लिखिए, उनकी different values को लिखिए. फिर आप देखेंगे कि दोनों quantities में अगर direct proportion है तो इन quantities के जो different values हैं उनके जो रेशो हैं वो इक्वल होंगे और ऐसे में जब हम रेशोज इक्वेट करते हैं हमें अननोन वैल्यू मिल जाती है. दिस इज द प्रोसीजर. नाउ वी टेक हियर क्वेश्चन 4. अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स. सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है जिसमें एक मशीन बॉटल्स फिल कर रही है इन 6 आवर्स. कितनी बॉटल्स? 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स. How many bottles will it fill in 5 hours? तो यहाँ पर अब आप वो दो क्वांटिटीज सोचिए जिनके बीच में हमें कनेक्शन ढूंढना है.
तब तक हम अननोन को वेरिएबल से डिनोट करते हैं। आप सोचिए जब तक मैं लिख रही हूँ, लेट द नंबर ऑफ बॉटल्स filled in 5 hours be x. We write here, let the number of bottles filled in 5 hours be x. ठीक है, 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स भर रही हैं हमने उसे मान लिया है x। अब आपने सोच लिया होगा वो दो क्वांटिटीज़ जिनके बीच में रिलेशनशिप हमें चेक करनी है, और वो क्वांटिटीज़ हैं, पहली तो नंबर ऑफ बॉटल्स दैट आर गेटिंग फिल्ड, एंड द सेकेंड वन इज़ द टाइम टेकन, कितने समय में कितनी बॉटल्स भरी जा सकती हैं। हियर द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस, एंड सो हियर वी विल राइट दीज टू क्वांटिटीज़ इन टेब्यूलर फॉर्म। हियर वी हैव द क्वांटिटीज़ एंड देयर डिफरेंट वैल्यूज़। ऐसा करने से हमें जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं और उनकी अलग अलग वैल्यूज़ भी मिल जाती है। वी फॉर्म वन टेबल in this way, and then we will be able to see the values very clearly. We write here, first quantity is number of bottles, and the second quantity is time taken. Time taken to fill the bottles, and so we take it in hours. We are taking the time in hours. Now we have been given 840 bottles. These are being filled in 6 hours. ये हमें information दी गई है, और अब हमसे पूछा है 5 hours में, तो टाइम हमें दिया गया है 5 hours, इसमें कितनी बॉटल्स भरी जाएंगी हमने उसे मान लिया है कि x बॉटल्स भरी जाएंगी। मान लीजिए x भर रहे हैं। With this we have all the information inside this table. अब यहाँ हम देखते हैं कि जितनी बॉटल्स होंगी उनको फिलअप करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जितनी ज़्यादा बॉटल्स होंगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, जितनी कम बॉटल्स होंगी उतना ही कम टाइम लगेगा उन्हें फिल करने में। और ऐसे में ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और ऐसे में हम इनकी जो अलग अलग वैल्यूज़ के रेशो हैं इनको इक्वेट कर सकते हैं। इक्वल रखने पर हमें ये अननोन वैल्यू x मिल जाएगी। We take here on next page, the number of bottles filled by the machine and the time taken are directly proportional to each other, and so the two ratios, the ratios of the values of the two quantities, we see here 840 upon x, this is equal to, here we see 840 upon 6, not x, here we will write 840 upon 6, this is equal to x upon 5. ठीक है, ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनकी अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं उनके रेशो इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और ऐसे में हमें मिल गया इनके रेशोज़ 840 upon 6 इक्वल टू x upon 5. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड x। 5 को यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए 840 के साथ, 840 into 5 upon 6, this will give you x, and so here we can divide by 6, 6 one times, here we have 6 one time, and then 4 times 24, 0, and so x will be equal to 700. 14 into 5 is 70 and 1 0, so x is equal to 700. So how many bottles can be filled? This implies 700 bottles can be filled in 5 hours. This is the answer to this question. The question was how many bottles will it fill in 5 hours, and so we write here 700 bottles will be filled in 5 hours. In place of can, we should give the answer in terms of the question asked. 700 bottles will be filled in 5 hours. I hope the question is very much clear. Every time we are following the same pattern, and every time we are seeing that there is a direct proportion here between the two quantities. Next we take here question 5. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram.
What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? Now here one photograph of the bacteria is shown, and if it is enlarged 50,000 times, then the length of the bacteria, it turns out to be 5 centimeter. जब यहाँ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इसको एनलार्ज करके देखा जाता है 50,000 टाइम्स, जूम इन करके देखा जाता है, तब जो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया है वो दिखाई देती है 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया कितनी है, और फिर पूछा गया है कि अगर सिर्फ 20,000 टाइम्स ही एनलार्ज किया जाए, ऐसे में जो एनलार्ज्ड लेंथ होगी बैक्टीरिया की वो कितनी होगी। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो पहले तो जो पूछा है उन्हीं को वेरिएबल से डिनोट करते हैं। लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया बी x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन में यूनिट ली गई है वो भी सेंटीमीटर है। और फिर हम मान लेते हैं आफ्टर एनलार्जिंग 20,000 टाइम्स, लेट द एनलार्ज्ड लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया बी y सेंटीमीटर। हमने अननोन वैल्यूज़ को वेरिएबल से डिनोट करना है। उसके बाद आप कनेक्ट कीजिए वो दो क्वांटिटीज़ जो इस क्वेश्चन में हिडन है। कौन सी है वो दो क्वांटिटीज़? पहली तो है एनलार्जमेंट, कितना एनलार्ज किया जा रहा है, और सेकेंड क्वांटिटी है द लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया आफ्टर एनलार्जमेंट, या हम कह सकते हैं एनलार्ज्ड लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। ये दो क्वांटिटीज़ हैं जो इस क्वेश्चन में दी गई हैं। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को हम एक टेब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर आगे चलते हैं कि देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। वी राइट हियर लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया बी x सेंटीमीटर and its enlarged length after enlarging 20,000 times it be y centimeter. Then we have been given the enlargement and then accordingly the enlarged length of the bacteria. We have been given the enlargement as 50,000 times and the enlarged length is given as 5 centimeter. So we write here in centimeter. This is the information given in the question. Now we have been asked to find the actual length of the bacteria. We have taken it to be x centimeter, the actual length, and now this is a special case. What do you mean by the actual length? जब हम actual length देखना चाह रहे हैं बैक्टीरिया की, इसका मतलब हम उसको enlarge नहीं कर रहे, और ऐसे में जो enlargement की वैल्यू हम लेंगे वो कितनी होनी चाहिए? It should be taken as 1. जब आप एक फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं और मान लीजिए कि आप उसको एनलार्ज कर रहे हैं बाय वैल्यू 2, इसका मतलब आप उसका साइज़ डबल कर रहे हैं, 2 टाइम्स एनलार्ज कर रहे हैं। और अगर आप एनलार्ज नहीं करना चाहते, वैसे का वैसा ही देखना चाहते हैं, तो एनलार्जमेंट की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? इट शुड बी 1, बिकॉज एनी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द सेम वैल्यू। तो ऐसे में ये एक स्पेशल केस है जहाँ हम एक्चुअल लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एनलार्जमेंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। और फिर थर्ड केस हमें दिया गया है जहाँ एनलार्जमेंट हो रहा है 20,000 टाइम्स, और हमने तब अज्यूम की है लेंथ ऑफ बैक्टीरिया एज y सेंटीमीटर। नाउ हियर दीज टू क्वांटिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना ज़्यादा हम एनलार्ज करेंगे उतनी ही बड़ी हुई लेंथ दिखाई देगी हमें बैक्टीरिया की। लेट अस सी ऑल्सो, हियर वी हैव बीन शोन द फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया। अब अगर हम इसे एनलार्ज करें, देखिए तो बैक्टीरिया की लेंथ बढ़ गई ना। ज़्यादा एनलार्ज करेंगे तो ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी, अगर हम कम एनलार्ज करेंगे तो कम लेंथ बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं ना, कम लेंथ दिखेगी हमें। तो ऐसे में जो एनलार्जमेंट है और फिर साथ ही साथ जो एनलार्ज्ड लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एंड सो वी कैन राइट हियर the enlarged length of the bacteria is directly proportional to the enlargement. And so here when we take the ratios of these two quantities, the ratios of different values, they will be equal. यहाँ ये ratio 50,000 upon 5, this ratio will be equal to this ratio 1 by x. And so in first case we can now write 50,000 upon 5, this is equal to, as we can see, 1 by x. यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट 50,000 इंटू x इक्वल टू 1 इंटू 5। यहाँ से x विल बी इक्वल टू 1 5 अपॉन 50,000।
Now this will be equal to 1 upon 10,000 on dividing by 5, and this can be written as 1 upon 10 raised to the power 4. This can further be taken as 1 into 10 raised to the power minus 4, or simply we can write x equal to 10 raised to the power minus 4 centimeter. And so with this we get the actual length of the bacteria. Hence, the actual length of the bacteria is how much? 10 raised to the power minus 4 centimeter. With this we have done the first part of this question. Now we take the second case. Here the enlargement is 20,000 times and then the length of the bacteria, it turns out to be y centimeter. तो ये जो ratio है 20,000 upon y, this will be equal to 50,000 upon 5. So here we take the next page to find the next value. Second case, also now 50,000 upon 5, this will be equal to 20,000 upon y. Now on cross multiplying we get 50,000 into y equal to 20,000 into 5. Now from here y will be equal to 20,000 into 5 upon 50,000. You can easily cancel these 4 zeros by 4 zeros, cancel 5 by 5, and y is equal to 2 centimeters. With this we can write the answer in words also. Hence, the enlarged length of the bacteria after enlarging how many times? After enlarging 20,000 times is 2 centimeter. With this we complete question 5, and also now we have completed the first 5 questions from exercise 13.1. I hope all these questions are clear to you, and in our next video we will take up the remaining questions from this same exercise. So bye for now, practice these questions.